हेलो दोस्तों, अगर आप भी यूपीएससी के टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो ये 20 क्वेश्चन आपके लिए हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। हर पेपर में ये रिपीट होते हैं, इनको अच्छे तरीके से कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, इन विच ईयर वाज द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश्ड? ऑप्शन ए 1947, ऑप्शन बी 1950, ऑप्शन सी 1952, ऑप्शन डी 1954। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी 1950। Objective number 2, the term green revolution in India is associated with which sector? Option A industrial sector, option B agriculture sector, option C information technology sector, option D service sector. Correct option है option number B agriculture sector. Objective number 3, the Gandhi Irwin Pact was signed in which year? Option A 1939, ऑप्शन बी 1932, ऑप्शन सी 1935, ऑप्शन डी 1931। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी 1931। ऑब्जेक्टिव नंबर 4, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द अपॉइंटमेंट फॉर द फाइनेंस कमीशन? ऑप्शन ए आर्टिकल 275, ऑप्शन बी आर्टिकल 277, ऑप्शन सी आर्टिकल 278, ऑप्शन डी आर्टिकल 280। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी आर्टिकल 280। ऑब्जेक्टिव नंबर 5, द क्वाइट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च्ड इन विच ईयर? ऑप्शन ए 1947, ऑप्शन बी 1942, ऑप्शन सी 1952 एंड ऑप्शन डी 1954। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी 1942। Objective number 6, when was the Indian National Congress INC founded? Option A 1885, option B 1850, option C 1890, option D 1854। Correct option है option number C 1890। Objective number 7, which year did India gain independence from British rule? Option A 1947, ऑप्शन बी 1950, ऑप्शन सी 1952, ऑप्शन डी 1954। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 1947। ऑब्जेक्टिव नंबर 8, द बैटल ऑफ बॉक्सर वाज फाउंडेड इन विच ईयर? ऑप्शन ए 1763, ऑप्शन बी 1764, ऑप्शन सी 1765 एंड ऑप्शन डी 1766। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी 1764। ऑब्जेक्टिव नंबर 9, इन विच ईयर डिड द पार्टीशन ऑफ बंगाल टेक प्लेस? ऑप्शन ए 1947, ऑप्शन बी 1905, ऑप्शन सी 1952, ऑप्शन डी 1954। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी 1905। Objective number 10, in which year was the non-cooperation movement launched by Mahatma Gandhi? Option A 1919, option B 1920, option C 1921, option D 1922। Correct option है option number B 1920। Objective number 11, the Swedish movement was launched after the partition of Bengal in which year? Option A 1907, option B 1905, option C 1912, option D 1914। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी 1905। ऑब्जेक्टिव नंबर 12, विच ईयर डिड द बैटल ऑफ पानीपत टेक प्लेस बिटवीन द मराठास एंड द अफगान फोर्सेस लेड बाय अहमद शाह? ऑप्शन ए 1747, ऑप्शन बी 1760, ऑप्शन सी 1752, ऑप्शन डी 1754। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी 1761। ऑब्जेक्टिव नंबर 13, when was the Pune Pact signed between Mahatma Gandhi and Dr. B.R. Ambedkar? Option A 1937, option B 1930, option C 1932, option D 1934। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी 1932। ऑब्जेक्टिव नंबर 14, the first round table conference was held in which year? ऑप्शन ए 1927, ऑप्शन बी 1930, ऑप्शन सी 1932, ऑप्शन डी 1934। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी 1930।
Objective number 15. The Simon Commission arrived in India in which year? Option A 1927, option B 1930, option C 1928, option D 1928. Correct option है option number C 1928. Objective number 16. In which year was the Treaty of Algiers signed between the Nawab of Bengal and British East India Company? Option A 1756, option B 1757, option C 1758, option D 1960. Correct option है option number A 1756. Objective number 17. In which year was the All India Muslim League founded? Option A 1947, option B 1905, option C 1902, option D 1906. Correct option है option number D 1906. Objective number 18. When was the Rowlatt Act passed by the British Government of India? Option A 1917, option B 1919, option C 1912, option D 1914. Correct option है option number B 1919. Objective number 19. In which year did the partition of India take place leading to the creation of Pakistan? Option A 1947, option B 1950, option C 1952, option D 1954. Correct option है option number A 1947. Last objective. In which year was the Indian Independence Act passed by the British Parliament? Option A 1948, option B 1950, option C 1952, option D 1947. Correct option है option number D 1947.